A very good morning, my dear students. In the chapter of measurement and motion, we covered the part of measurement in which we learned what is the importance of measurement, what is measurement, how it helps in our daily life, right? We also learnt about the estimation. What was the difference between the accurate measurement and the estimation? That what we have done in this chapter. So we have gone through the one part of the chapter, that is measurement. Now we are going to switch over to the next part, that is motion. Motion क्या होता है? अगर एक layman language में देखें, motion क्या होता है? Moving thing. That is motion. हमें पता कैसे चलता है कि the object is in motion? For example, if we have two cars, one car that is A, that is moving, it has changed its position from A to B. पहले वो A position पे थी, अब वो B position पे, उसने change कर ली position. तो this change in position with time and with respect to some stationary object, right, that is called as motion. लेकिन अगर एक और कार है जो बिल्कुल position change नहीं कर रही है, that is, it is at rest. It is not changing its position with time with respect to any stationary object. We call it as that the car B is at rest. तो वो motion में नहीं है. तो जहाँ पर position change होगी with time or with reference to some stationary object, right, like we have tree, we have the building, वो सारी चीजें रेस्ट पे होती हैं, हम उसे रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं. उस रेफरेंस पॉइंट से एक कार ए पोजीशन पे थी, अब वो कार एक बी पोजीशन पे है. तो नाउ देयर इज द रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ट्री और विद रिस्पेक्ट टू सम ए पोजीशन. तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की विद टाइम या रेफरेंस टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, राइट. सेकेंड थिंग हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ मोशन. कौन कौन से होते हैं? We'll learn the types of motion with the help of examples. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसलेटरी. ट्रांसलेटरी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज मूविंग. ठीक है, अ कार इज मूविंग, तो यू माइट हैव सीन की पूरी कार मूव करती है. ऐसा नहीं होता है कि उसका स्टीयरिंग अलग मूव कर रहा है या व्हील्स अलग मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. तो पूरी कार मूव हो रही है. दैट मीन्स ईच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट covers the same distance in motion. पूरी की पूरी कार के हर एक पार्ट इट इज कवरिंग द सेम डिस्टेंस, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल, यू आर मूविंग ऑन द रोड, तो योर कंप्लीट बॉडी इज मूविंग, तो उसमें क्या है, दैट इज बेसिकली द ट्रांसलेटरी मोशन. यू आर मूविंग बिकॉज द कंप्लीट ऑब्जेक्ट और ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस, राइट. There are two type of translatory motion. सबसे पहले आता है linear. Linear का मतलब होता है when the object is moving in a straight path. It is moving on a straight road. For example, car moving on a straight road. तो वो linear है. हम linear को rectilinear motion भी कहते हैं because it is related to straight path, right? Next is circular. इसको हम curvilinear भी कहते हैं. Circular का मतलब example is when the car is moving on a curved path or a curved road. So that is circular motion. लेकिन remember, दोनों cases में क्या हो रहा है, the object is completely moving. Each and every part of the object is covering the same distance, right? I hope the translatory part is clear to all. It's very simple. Let's come to the rotational motion. Rotational motion में क्या होता है, आप सबने एक टॉप देखा होगा. टॉप जब मूव करता है तो उसमें हर एक पार्ट अलग अलग डिस्टेंस मूव करता है. ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ऑल द पार्ट्स आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस. नो, ईच एंड एवरी पार्ट इज नॉट कवरिंग द सेम डिस्टेंस. जो इसका आउटर पार्ट्स होते हैं दे आर कवरिंग मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू द इनर पार्ट्स, एंड इट इज जस्ट मूविंग अलोंग दिस एक्सिस. तो ये एक मोशन होता है व्हेन द पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर द सेम डिस्टेंस. तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रोटेशनल motion, right? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव द टेबल फैन. अब टेबल फैन का जो सेंटर पार्ट है वो फिक्स्ड होता है. दैट इज बेसिकली इट्स मूविंग अलोंग इट एक्सिस, राइट. अब अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ इज मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. दैट इज रोटेशन, दैट यू ऑल नो. तो इट इज मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स, दैट यू ऑल नो. इट्स रोटेशन. तो वो क्या है, हमारा रोटेशनल मोशन. Is that thing clear to you? So all the parts are not covering the same distance, right? Inner parts are covering the less distance as compared to the outer parts. So we call it as rotational motion. Another type of motion is periodic. देखो, अगर कोई motion repeat होता जाता है तो उसे हम repetitive कहते हैं, right?
that motion which repeats itself at regular intervals of time, so we call it as periodic motion. Just for example, when the earth is moving or revolving around the sun, it takes about 365 1/4 days, right? It's called one revolution. तो वो एक टाइम पीरियड है, it's a fixed one, right? तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू रिपीट द मोशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन. तो पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल से पेंडुलम ऑफ क्लॉक, स्विंग और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ व्हिच आर रिपीटिंग इटसेल्फ. Like when we have the strings of guitar, or when you just strike the skin of tabla, again it's basically your what? Periodic motion. लेकिन अगर कोई motion repeat नहीं करता है after at regular intervals of time, so we call it as non-periodic. For example, you are moving on a road, you're moving your arms, swinging your arms while moving, right? Movement of your heartbeat. That is basically your non-periodic, which are not repeating after regular intervals of time. And periodic का ही एक पार्ट होता है और स्पेशल टाइप है ऑसिलेटरी. ऑसिलेटरी का मतलब होता है इट इज अ मोशन विच इज रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, लेकिन इट मूव्स लाइक दिस. ये मीन पोजीशन होती है. आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम में एक बॉब होता है, इट्स अ मेटेलिक बॉब. अब अगर उसको जरा सा भी you want to displace it, it is going to move from O to A, then from A to, it's not stop here, it will go to B and then come back to O. This is oscillatory motion, right? When it is moving across its mean position. So that is basically oscillatory motion. Oscillatory motion, it's a type of periodic motion. I hope these type of motions are clear to you. When the object, all the parts are moving good through the same distance, it's translatory, it's of two type, linear and circular. Rotational में क्या होता है? All the parts are not covering the same distance. Periodic में it's repeating after regular intervals of time. Non-periodic, it's not repeating after regular intervals of time. Oscillator, it's a type of periodic motion when the object is moving across the mean position, right? अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक से ज्यादा मोशन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट व्हील्स ऑफ बाइसिकल, अब व्हील्स ऑफ बाइसिकल में आपने देखा होगा पूरा का पूरा बाइसिकल मूव कर रहा है. या फिर इफ यू टॉक अबाउट द रोलिंग बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, तो उसमें क्या हो रहा है? पूरी की पूरी बॉल मूव कर रही है. तो एक तो वो हो गया ट्रांसलेटरी मोशन. और व्हील्स ऑफ द बाइसिकल दे आर मूविंग and all the parts are not covering at the same distance, so that is basically your rotational motion. तो एक ही जगह पे हमारे दो टाइप ऑफ मोशंस भी हो सकते हैं. I hope it's clear to you. So आपके पेपर में आपको examples आ सकते हैं. You'll be given some examples and you'll be asked to find out what type of motion is there. It's quite a good and interesting question which is generally asked, right? So we have come to the end of the chapter, and for your homework you'll be doing a short assignment related to the topics which we have covered till here. I hope the things are clear to you. Thank you so much.